Hello, everybody. Welcome back. This is Sia Rishabhed signing in. So, this is our lecture number 2 of SPOM Set C, paper number 6, which is basically your Arbitration and Conciliation Act. In this particular video, we will be covering chapter number 2, which is Fundamentals of Arbitration. We have uploaded chapter number 1, which includes basic introduction about arbitration and all. But in this particular video, in this particular chapter, we will deep dive into the provisions of arbitration, which is very, very relevant. With this chapter becomes very important from your exam perspective because this chapter has lot of very good provisions which are used in real life as well. All right. So now, without wasting much of time, let us begin. So basically, what does an arbitration means? We have learned about arbitration is a process wherein we are not going to the court, whether rather we are going to an you know court similar kind of thing, wherein what will happen is that we will appoint an arbitrator. Unlike in courts, the judge will always be sitting over there, right? Now the judge will give the judgment. In case of an arbitration, both the parties decide a particular person as a judge, and that person is known as the arbitrator. All right. So this is a basic brief understanding about the arbitration. So what does it mean? It involves one or more neutral persons, which is selected by the disputing parties. In our previous example, in our previous class, we had taken example of Rishabh and Rahul. So if there is a dispute between Rishabh and Rahul, then rather than going to the court at the tedious task, tedious process, the structured process of the court, the lengthy process, the costly process of the court, we will go for an arbitration which will work according to our wish. All right. The decision would be binding upon us. That is the fact of this particular thing. So that is the basic understanding about the arbitration. Now, it is governed by Arbitration and Conciliation Act 1996. It covers both domestic and international commercial arbitration. In the last class also, we had learned very briefly. So domestic arbitration, where both the parties are residing in India. International commercial arbitration is something wherein the parties are, one is from India and another party is of outside India. So let us cover the definition of international commercial arbitration along with this. Now, if you come up here, international commercial arbitration, it means legal dispute, whether contractual or not, which is considered as a commercial under the law, which is enforceable in India, where at least one party is Indian party and another party is outside India. Okay? This is the basic understanding. So, which is enforceable in India, where at least one party is individual of a country other than India. So one party is of India, the another party is an individual of another country, which is not a Indian country, right? The another party is a foreign government. The another party is a body of individual of any other country. The other party is basically the foreign company of any other country, right? Now, this is basically the definition of international commercial arbitration, which is given in your module, right? Right. Now it means legal dispute, whether contractual or not, considered as a commercial under the law which is enforced in India, where at least one party is individual of any country other than India, body corporate which is incorporated outside India, association, body of individuals whose central management and control is outside India. Central management and control is outside India. Very deep. MCQ can be framed from here. Okay? Central management and control should be outside India, which is a government of a foreign company. So basically, एक party India की है, another party is of foreign country, which can be either your individual association of person या फिर body of individuals. It can be a foreign company. It can be a body corporate which is incorporated outside India, right? So this is the definition of international commercial arbitration. Now, A.K. Balaji versus Government of India and others, Madras High Court ka judgment hai, wherein it says that foreign lawyers cannot be debarred to come to India and conduct arbitral proceedings with respect to dispute arising out of a contract relating to international commercial arbitration. मतलब अगर कोई foreign वाला बंदा है, foreign lawyers है, he can't be debarred. अगर कोई foreign वाली party है, he is appointing as a lawyer, मतलब कोई represent करने के लिए किसी third person who is residing outside India, then he cannot be debarred from representing him in India. ठीक है? So this is the Madras High Court का judgment. Now, Arbitration Act. So basically, your Arbitration Act is divided into 4 parts. ठीक है? Arbitration first part के अंदर total 10 chapters are there, which talks about the arbitration procedures. ठीक है? Arbitration के related provisions. Second part talks about foreign awards. So basically, foreign awards कैसे होता है? This foreign awards क्या होता है? कैसे होते हैं? This we will learn in your chapter number 3. So this
10 chapters जो दिए हुए हैं, the provisions and part 1 we will learn in chapter number 2. This 2 chapters of enforcement of foreign awards, which is given under your part 2, we will be covering this part in your chapter number 3. So chapter number 3 is all about this. Chapter number 4 mein we will cover about conciliation provisions. So only 4 chapters are there. Conciliation provisions is basically part 3, which we will cover in your conciliation chapter number 3. And lastly, chapter number 4 and the part 4, which is basically supplementary provisions. So supplementary provisions are not forming part of your ICI module. So only 3 parts. First part we will learn in chapter number 2. Second part we will learn in chapter number 3. And third part we will learn in chapter number 4. I hope this is very, very clear. Now, basic features of an arbitration. Firstly, let us complete the entire chapter. We will come back to this. और जब हम वापस आएंगे ना, you will say, sir, there is nothing to read in this. There is nothing to buy hard, because after reading all the provisions, all this will be like this. You will be able to remember. You just need not to remember also. Just read. You have to read it like this, and you will be done with this point. Okay? So this will come at the end. Now, authorities under the act. Now, a lot of places you will read about judicial authority, code. So, ठीक है, तो what does this mean? So, judicial authority मतलब every court is a judicial authority, but every judicial authority is not a court. ठीक है, so this is a point to remember for you, from an exam perspective. Now, it includes a court which is defined under section 2 clause 1 subclause E के अंदर जो define किया गया है. So what is this 2(1)E? So 2(1)E talks about court. तो मतलब judicial authority includes court, right? Judicial authority includes court, which is as follows. तो मतलब in this particular chapter, in this act, अगर international commercial arbitration होता है, if in case of an international commercial arbitration, we will refer only to high court. International commercial arbitration होता है तो court would be high court. If it is a domestic arbitration, domestic मतलब both the parties are of an Indian citizen, are of an India, then in that particular situation, we will either go to a high court or we will go to a district court, right? We will go to a high court or we will go to a district court. So international commercial arbitration, we will go to high court. Domestic arbitration होता है तो we will go to either high court or we can go to district court. Now here is a catch that the district court. So but in case of another arbitration बोले तो आपका domestic arbitration हो गया. It does not include civil court of a grade which is inferior to principal court. So what does this mean? Principal court बोले तो district court से level district court हो गया. Principal court का मतलब क्या होता है? Principal court का मतलब होता है आपका district court. Now, any court which is inferior to district court, we cannot refer arbitration proceedings to that court. I hope this is very, very clear to you. मतलब अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होता है तो वी विल गो टू मिनिमम डोमेस्टिक कोर्ट और उसके ऊपर जाएंगे तो हाई कोर्ट. वी कैन नॉट गो इंफीरियर, वी कैन नॉट गो बिलो to the district court. I hope this is very, very clear to you. Now, it also includes special tribunal like consumer forum. So this is not relevant. Now, Supreme Court or High Court or any person designated by Supreme Court or High Court. अब क्या होता है ना, we can refer to the Supreme Court or High Court. Let's say in case of domestic arbitration, we go for a district court. Now, we can refer to High Court in what scenarios? We can refer to High Court for appointment of arbitrators. If there is some any other provisions which other party is not complying with. So all these kind of situations, just a second, all those kind of situations, what we can do is we can refer to High Court. Similarly, in case of an international commercial arbitration, if arbitrators are to be appointed, then we will refer to whom? We will refer to Supreme Court, right? We will go to High Court for first arbitration proceedings ke conduct ke liye. If arbitrators are to be appointed, we will make an application to the Supreme Court. So likewise, this is the role of Supreme Court and High Court in the arbitration proceedings. So specific tasks to appoint arbitrator upon request of the parties. Authorities for appointment of an arbitrator. Appointment of arbitrator के लिए authorities कौन-कौन होगा? International commercial arbitration है तो Supreme Court, other arbitration है तो High Court. I hope this is very, very clear. Now section 2 क्या बोलता है, इसमें कुछ definitions दी हुई है. There are a lot of definitions given in your module, but only relevant जो हमारे exam perspective के लिए relevant है, only those we are covering over here. Now section 2(1)D क्या बोलता है? Arbitral tribunal means sole arbitrator या फिर panel of arbitrator. A lot of places you will learn word as AT. AT बोले तो क्या हो गया? AT बोले तो हो गया आपका arbitral tribunal. ठीक है? AT बोले तो क्या हो गया? AT बोले तो arbitral tribunal हो गया. Right? Now, just a second. Yeah. तो आपका AT बोले तो क्या हो गया? Arbitral tribunal हो गया. Now, अगर एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे, so that is also called as an arbitral tribunal, but in general language we will call him as a sole arbitrator, right? Arbitrator का मतलब आपको समझ में आ गया, he is equivalent to a judge.
who will give judgment, who will give, who will give decision in our on our arbitration case. This is clear, right? Now, arbitrator, sole arbitrator भी हो सकता है. Arbitral tribunal मतलब more than one arbitrator if we are appointing. And we have learned in the first chapter that there should be odd number of arbitrators. So let's say we appointed 3 arbitrators. So all those 3 would be called as a arbitral tribunal, or basically the panel of arbitrators. I hope this is very, very clear to you. Now, arbitral award also includes interim award. अब arbitral award क्या होता है? This we will learn in the later part of this particular chapter. Now, international commercial arbitration का definition we had covered. Now, section 3 talks about receipt of written communication. Section 4 talks about waiver of right to object. These 2 points, and I think point number 5 also, yes. Extent of judicial intervention. ये वाले points जो है we will learn in the later part of, or maybe at the end of this particular chapter. हम सारे provisions cover करके we will come back to this particular points. All right. Yeah. Now let us move on to the very, very, very important point of this particular chapter, which is arbitration agreement. Now onwards, your actual this thing, from exam perspective से exam में कहाँ से question frame हो सकता है, वो वाले यहाँ से आएंगे. ठीक है? So please listen to it very, very carefully. Now, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट बोले तो एक तरीके का अग्रीमेंट होता है वेयर बिटवीन बोथ द पार्टीज हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग आर्बिट्रेशन में जाएंगे. ठीक है, ये अग्रीमेंट का डेफिनेशन जनरल हो गया. अब आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है? लेट अस लर्न. नाउ कंसेंट ऑफ पार्टीज इज मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर एन आर्बिट्रेशन टू हैपन. अगर हम लोग को आर्बिट्रेशन में जाना है, इफ मी एंड राहुल we have a dispute between us, we want to refer to arbitration, then we must have an agreement between us in order to go for an arbitration. All right, we must have an agreement, we must have a written agreement between us. So let us read more about it. This is a preliminary, this is the fundamental requirement for going for arbitration to happen. An arbitration agreement is mandatory. The document which notes the consent of the parties is known as the arbitration agreement. So the document which contains the consent of the parties is known as the arbitration agreement. अब हम लोग का agreement हुआ, अब तो उसको रिटर्न में करना पड़ेगा, और जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बोलते हैं. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल ऑलवेज बी इन राइटिंग. ये हमेशा क्या होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए. इट कैन नॉट बी ओरली. आई एम रिपीटिंग ट्वाइस. ठीक है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन बी इन, शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग एज फॉलोज. मतलब कैसे हो सकता है? इट कैन बी एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, और इट कैन बी अ सेपरेट एग्रीमेंट. आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट बोले तो क्या? Which is basically the principal contract. Matlab, let's say me and Rahul has entered into a contract wherein Rishabh will supply certain goods and services to Rahul over a period of next 1 year. Okay? Now, in that agreement, we have clearly defined what are roles and responsibility of both the parties, how I will deliver the goods to him, how I will deliver the services to him, what would be the frequency of the payment, right? What would be the situation, like how what would be the acceptance or rejection ratio. So all the terms and conditions has been decided into a particular contract. That is basically the principal contract. In that contract only, what we have done is that we have added a clause saying that clause number 10 of this agreement, wherein we mention that in case any dispute arises between us, we will refer to an arbitration. So that is basically a clause that we have mentioned into a principal contract. Principal contract क्या है? Principal contract is to supply goods and services between me and Rahul. In that we have mentioned a clause which talks about arbitration. ठीक है, जिसमें clearly हमने agree किया है कि अगर कोई dispute होता है तो we will go for an arbitration. So this is basically first point, which is basically arbitration clause in a contract. तो एक contract के अंदर हमने क्या किया? Arbitration clause को enter किया. Now, second is basically a separate agreement. अब क्या हुआ? हमने contract तो enter कर लिया था, लेकिन we forgot to mention arbitration clause into that particular contract. Now, हम लोग एक separate agreement कर लेते हैं कि भाई pursuant to that contract, उस contract को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी dispute हो जाती है हमारे बीच में, if there is any kind of dispute in relation to that principal contract, then we will go for arbitration. All right, so this is a separate agreement we have entered into. I hope both the points are very, very clear to all of you. Now, in other words, arbitration agreements clearly notes that in event of dispute between the parties, they will not go for a court, rather they will go for a arbitration proceedings. I hope this is clear. An arbitration agreement is in writing and valid if it is contained in a document signed by the parties. मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का वैलिडिटी कैसे चेक करना? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का अगर आपको वैलिडिटी चेक करना है तो इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी अग्रीड बाय बोथ द पार्टीज. अब अग्री कैसे होगा? बोथ द पार्टीज शुड साइन, राइट? ये तो बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज आपका फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा ना.
इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा, इट शुड बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज, राइट? सेम वे एन एक्सचेंज ऑफ लेटर, टेलीग्राम और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड विच प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ अग्रीमेंट। अब क्या होता है कि आइदर इट शुड बी साइंड, और क्या होता चाहिए कि एक आजकल जैसे ईमेल कम्युनिकेशन होता है, ओके आई एग्री विद दिस क्लॉज सेइंग दैट वी विल गो फॉर एन आर्बिट्रेशन, बोथ द पार्टीज हैव अग्रीड ओवर द ईमेल, सो दैट इज आल्सो वैलिड, राइट? कि राइटिंग में है एंड इट शुड बी आइदर साइंड और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी हुआ तो दैट इज आल्सो फाइन। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कैसे होते हैं? आर्बिट्रेशन क्लॉज अपन ने पढ़ लिया था, यू हैव लर्न। सबमिशन अग्रीमेंट क्या होता है? अब क्या होता है, एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है, एक होता है कि सेपरेट अग्रीमेंट अपन ने एंटर कर लिया। दो पॉइंट्स अपन ने यहाँ पे पढ़े थे इफ यू रिमेंबर, ठीक है? एक ये वाला पॉइंट अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, सॉरी, एक वो वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा था, एक यहाँ पे पढ़ रहे आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है, दूसरा होता है सबमिशन अग्रीमेंट। सबमिशन अग्रीमेंट क्या होता है? और डिस्प्यूट हम लोग ने पहले एंटर नहीं किया था एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन डिस्प्यूट होने के बाद में we had not entered into a contract, we had not agreed for going for an arbitration before the dispute had arisen. Now once the dispute has arisen, अब dispute हो गया है, after the dispute we are agreeing that we will go for an arbitration, so that is a submission agreement, right? It is an agreement, it is an agreement to refer dispute that already exists to the arbitration, मतलब already existence में है कोई dispute, उसको हम लोग arbitration के लिए refer कर रहे हैं, that is called as a submission agreement. Basically the agreement entered into after the dispute has arisen, which is known as a submission agreement. I hope this is very very clear to all of you. Now this is a very important point which is highlighted in red over here. Arbitration agreement through reference. अब क्या होता है कि कई बार let's say we have entered, me and Rahul has entered into 3 contracts during the year, ठीक है? first and second contract के अंदर there is a arbitration clause, ठीक है? But in the third agreement, third contract, we had mentioned that the arbitration shall happen as per the contract, as per the contract number 1 and 2. We are referring in third contract, we are referring to the first and second contract for arbitration clause. Is that valid? Yes. So high Supreme Court का judgment है, that is also valid. If you are referring to a contract which contains arbitration clause, that is also valid, ठीक है? तो parties can arbitrate by referring to another contract which is contained in arbitration agreement. This is very clear to all of you. Now arbitration agreement is a contract, मतलब it should have all the valid requirements of a valid contract. Consensus addendum, मतलब consent of both the parties is mandatory. एक पार्टी, हमने अग्री किया कि हम लोग जाएंगे आर्बिट्रेशन के लिए, लेकिन बाद में एक पार्टी बोलता है कि नहीं हम लोग तो नहीं जाएंगे अभी, तो क्या अदर पार्टी, जो दूसरी पार्टी, वो जा सकती है आर्बिट्रेशन के लिए? देन दैट पार्टी कैन नॉट गो फॉर एन आर्बिट्रेशन, ठीक है? इफ आर्बिट्रेशन, इट शुड बी गिवन बाय ऑल द पार्टीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स. इफ कंसेंट इज नॉट देयर देन इट इज नॉट अ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं होगा उसको, बोथ द पार्टीज का कंसेंट इज मैंडेटरी, ठीक है? इफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज देयर देन वन पार्टी कैन नॉट गो टू द कोर्ट फॉर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, क्या उसके बाद भी एक पार्टी जा सकती है कोर्ट में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए? नो. इन दैट केस ऑल्सो दोनों पार्टीज का कंसेंट चाहिए होगा आपको क्या करने के लिए? प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कराने के लिए. ऑलराइट. नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अंदर अपन ने क्लॉज डाला था कि हम लोग वी विल गो फॉर एन आर्बिट्रेशन. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट Indian Contract Act के अंदर there are certain conditions which needs to be fulfilled to have a valid contract. Let's say some of the conditions are not valid there. कुछ तो conditions का breach हुआ है and therefore that principal contract is void. In that principal contract there was a arbitration का clause. क्या due to the voidance of that principal contract will my arbitration clause also be void? No. This is because of the doctrine of separability. Because the main principal contract is void, I cannot say that my arbitration agreement is void, my arbitration clause is void. This is because of the doctrine of separability. It means arbitration agreement is an independent agreement. The arbitration clause is a separate agreement apart from the principal contract. This is the interpretation of the law. This is the provisions of the law. Okay? And to the So it means arbitration agreement is an independent agreement to the main contract, which is the principal contract. If principal contract is void, arbitration agreement still remains valid. Arbitration agreement will still be the valid. All right. I hope this should be very, very clear to all of you, right?
नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वही अपन ने जो पॉइंट्स पढ़े थे वो समराइज करके दिए हुए हैं। इट शुड बी इन राइटिंग, मैंडेटरी होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ कंसेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी, वी शुड हैव अ क्लैरिटी दैट वी विल गो फॉर एन आर्बिट्रेशन। इसमें इफ कंडीशन आ जाता है देन देयर इज नो क्लैरिटी। इसका एग्जांपल देता हूं, अपॉन डिस्प्यूट इट शैल बी, एग्जांपल इन एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन क्लॉज इट इज मेंशन्ड दैट अपॉन डिस्प्यूट if it shall be mutually decided or it can go for arbitration if parties so determine। यहाँ पे if condition आ गया, there is no certainty that we will go for arbitration क्या, so that is not a valid arbitration agreement। all right, there should be a clear cut clause saying that in case of dispute we will go for arbitration, there should not be if and but, no, if and but is there then it is not a valid arbitration agreement। defined legal relationship, only legal matters, other than legal matters can be arbitrated, legal matters cannot be arbitrated। अगर कोई legal matters है that will go for what, that will we will go for a court proceedings only। ठीक है, dispute out of illegal activities cannot be submitted for sorry, I said something wrong here, sorry, kindly rectify me। डिफाइंड लीगल, अगर कोई लीगल मैटर्स है दैट कैन ओनली बी आर्बिट्रेटेड, ओनली लीगल मैटर्स कैन बी आर्बिट्रेटेड। अगर कोई इलीगल मैटर्स है दैट कैन नॉट बी आर्बिट्रेटेड। इलीगल मैटर्स को स्मगलिंग का एक्टिविटीज हो रहा है, सो कैन वी गो फॉर आर्बिट्रेशन? नो, वी कैन नॉट गो, वी हैव टू गो फॉर कोर्ट, राइट। नाउ सेम वे फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड, जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, द आर्बिट्रेटर जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को अपन ने अपॉइंट किया था, द डिसीजन गिवन बाय विल बी given by him will be binding upon the Rahul and Rishabh। ठीक है, जो डिसीजन आएगा दैट विल बी बाइंडिंग अपॉन बोथ ऑफ अस। ठीक है, दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। And mere use of word like arbitration, arbitrator will not make it as an arbitration agreement। Certain matters only to be resolved through court। अभी देखो illegal matters हम लोग कोर्ट के लिए जाएंगे। There are certain other matters which only to be executed through court। What are those matters? It is like criminal offense अगर हुआ है, matrimonial disputes है, there is guardianship matters related है, अगर ऐसा कोई matters है, so these matters will be going for an arbitration, this will only go for an court and not for an arbitration। And signature of both the parties is compulsorily required। नाउ टर्मिनेट, अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को आप टर्मिनेट कैसे करते हो? टर्मिनेशन कैसे होता है? म्यूचुअल कंसेंट से टर्मिनेट कर सकते हैं कि भाई हम लोग वी विल नॉट गो फॉर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, रादर वी विल गो फॉर एन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे दो पॉइंट्स है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट था कि आई विल डिलीवर यू गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आफ्टर 2 months we terminate the contract, we enter into a contract to terminate that principal contract। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया देन माय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विल आल्सो बी टर्मिनेटेड। नाउ this is different from our validity of the contract। now in the earlier point यहाँ पे अपन ने doctrine of separability में यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि अगर मेरा principal contract is void then my arbitration agreement remains valid। ठीक है, principal contract is void, arbitration agreement remains valid। if principal contract is terminated my arbitration agreement will also be terminated। this is something which you should be very very clear, right। यहाँ पे देखो मैंने समरी भी दिया है, अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है तो मेरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ए बोले तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट विल आल्सो बी टर्मिनेटेड। लेकिन अगर मेरा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मेरा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो क्या मेरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी वॉइड होगा? क्या मेरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, माय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विल आल्सो बी वैलिड। ठीक है, ये आपको खोपड़े में घुस जाना चाहिए। ठीक है, नोवेशन, अब क्या होता है ना, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा फाउंडेशन के टाइम में, अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज था, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट अपन ने एंटर किया लेकिन उसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं है। अगर उसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं है then in that case also it would be assumed that कि हमारा arbitration agreement is terminated। now death of parties, अगर both the parties का डेथ हो जाता है, किसी का भी डेथ हो जाता है, तो हमारी जो लीगल हायर्स है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, in that case वो they will be responsible for the arbitration proceedings। in that case arbitration proceedings terminate नहीं होगी। arbitration agreement is not discharged by death of any party, legal representative of the deceased party shall be enforceable for arbitration agreement। अगर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिजीज पार्टी के, they would be enforceable for what, they would be enforceable for arbitration agreement। now operation of law, if any right of action is extinguished then arbitration agreement is terminated। I hope this is very very clear to all of you। this was 11 pointers with respect to arbitration agreement, very 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 important from your exam perspective। now conduct of arbitration proceedings, अभी arbitral proceedings कैसे conduct करने का है। नाउ प्रीरेक्विजिट्स फॉर कंडक्टिंग ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, सबसे पहले तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ पीएजी राजू वर्सेस पीवीजी राजू, ठीक है, held that arbitration agreement is not a prerequisite if one party applies to the court।
one party applies to the court and another party does not object, another party कहती है कि ठीक है, अपनी सहमति देती है कि okay, we will I don't have any objection, then the parties are allowed to go for arbitration. This is similar to what we have discussed earlier also, कि arbitration agreement is mandatory, वो होना ही चाहिए, लेकिन in case there is a no arbitration agreement, dispute arose, one party applies to the court, another party does not object, another party भी वही चाहती है कि हम लोग को arbitration के लिए जाएंगे, in that case also you both can go for an arbitration proceedings. All right, this should be clear to all of you. Now notice required prior to referral of dispute. अब क्या होता है ना, notice is required prior to referral of dispute. अब क्या होता है कि notice by one party to another party is mandatory. एक पार्टी का notice to the another party is very very mandatory in nature. ठीक है, referring the dispute to the arbitration mandatory to satisfy the conscious ad idem वाला condition. मतलब conscious ad idem मतलब consent by both the parties. अगर this condition needs to be satisfied, then a notice should be given by the disputing party to the other party saying that I am going to the arbitration proceedings, and if you object, then kindly respond to this particular notice. This is a point which talks about the notice needs to be given for referring to the dispute. Now here one note is that making a claim by one party does not show existence of dispute, whereas a request would arise only when the dispute has arisen between the parties. मतलब एक पार्टी ने कहा कि भाई मेरे को तेरे से प्रॉब्लम है, you have reached the condition, but another party saying that no, we have not reached the condition. ठीक है, अगर दोनों के बीच में dispute होता है, then only we can go for arbitration. खाली एक पार्टी बोलता है कि नहीं नहीं भाई मैंने ये ऐसा किया है, तो it would be like kind of very difficult to go ahead with arbitration proceedings. ठीक है, now appointment of arbitrator. We have discussed 2-3 times also earlier that appointment of arbitrator is to be done by the disputing parties. It can also be done by the arbitral tribunal. Arbitral tribunal बोले तो it can also be done by the, sorry, not by the arbitral tribunal, it can also be done by the institutions. Institutions बोले तो हम लोग जाएंगे institution, हम लोग आगने वाले chapters में we will learn about that, कि how we can refer to an arbitration to the institution. So we can refer to the institution, that institution will appoint the arbitrator for us. ठीक है, now parties are free to determine any number of or any odd number of arbitrators. The word odd is very very important over here. Any odd number of arbitrators. ठीक है, any odd number of arbitrators are to be appointed. It can be 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, कुछ भी हो सकता है, लेकिन it should not be even number. If no consent between the parties for appointment of arbitrator, then any order or award by arbitrator will be null and void. मतलब अगर अब arbitrator is appointed, if that appointment of arbitrator is not agreed upon by the parties, then how the award given by that person, how the award given by that arbitrator would be what? How that award given by that arbitrator would be valid on us? How that would be enforceable on us? अगर that needs to be appointed by us, the arbitrator needs to be appointed by us. If he is not appointed with the consent of us, then how the award would given by him would be enforceable on us. ठीक है, that is what this point is talking about. Now arbitral या फिर arbitrator या फिर arbitral tribunal बोले तो जो 3, 4, 3, 5, 7 the number of arbitrators will appoint. So the sole arbitrator or maybe the arbitral tribunal cannot consult third party without disclosing it to the other parties. Kindly make this as other parties. ये थर्ड पार्टी नहीं होगा यहाँ पे, you just write it down, other parties बोले तो the parties मतलब राहुल एंड ऋषभ. ऑलराइट, नाउ पीरियड ऑफ लिमिटेशन. अब क्या होता है कि देयर इज अ लिमिटेशन एक्ट इन अवर, हमारे इंडिया की जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर एक लिमिटेशन एक्ट करके होता है. अंडर दैट लिमिटेशन एक्ट, there for any kind of dispute there is a certain time limit prescribed. Let's say there is a dispute with respect to a loan. In that kind of dispute, it is to be settled within 3 years. अगर कोई dispute arise होता है and that party, let's say I have given loan to Rahul, 3 लाख का लोन दिया था and that person is not paying me the loan. ठीक है, अब वो लोन मेरे को नहीं दे रहा है. If I have to go for an arbitration, then I have to sue him within 3 years. This is what the time limit prescribed under the Limitation Act. ठीक है, if I go for arbitration, let's say maybe after 5 years, 5 years के बाद में I go and say that I had given him a loan, he is not repaying me back. Can this time limit which has exceeded, मतलब 3 साल का time limit is prescribed under Limitation Act. However, 5 years has lapsed. Now, can I go for arbitration? Then the Arbitration and Conciliation Act says that period of limitation as prescribed under Limitation Act shall be valid, shall be the provisions of those Limitation Act will be applicable in case of Arbitration and Conciliation Act as well, and therefore you cannot go for arbitration. This point should be clear. Let us read it from the notes. Now Limitation Act 1963 क्या बोलता है? If it is applicable to arbitration proceedings,
Any arbitral proceedings commenced after limitation period will be time barred. मतलब अगर 3 साल के अंदर there are certain different situations के लिए different time limit is prescribed. If you are not going for you are not making application within that time limit, then you cannot go for arbitration proceedings. ठीक है. अब A ने लोन दिया था 1 लाख रुपए का, किसको? B को दिया था on 1st of January 2020. Now it is to be repaid by 1st of May 2020. For 4 months he had given the loan, that within 4 months you have to repay me the loan. Now, however, B did not pay the loan due date. अभी क्या हुआ? ड्यू डेट मतलब 1st of May 2020 को ड्यू डेट था. He had not repaid the loan. Now, therefore, A goes for arbitration proceedings on 1st of January 2025. 1st of January 2020 को लोन दिया था. 1st of May 2020 को it was to be repaid. However, it was not repaid up to 1st of January 2025, and now he is going for arbitration proceedings. Can he go for? No, he cannot go for arbitration proceedings. Now, equal treatment, both the parties are to be treated equally. Each party shall be given full opportunity to present their case. Nothing to इसमें कुछ बोलने का जरूरत नहीं है. This is the common sense. ठीक है. Now, determination of procedure to be followed for conduct of proceedings. अब proceedings conduct करना है arbitral का, ठीक है, तो आप कैसे conduct करोगे? Now, parties are free to agree the procedure. That is these are main differences between court proceedings and the arbitral proceedings. ठीक है. फर्स्ट वन जज वाला हो गया, कोर्ट में जज बैठा रहता है, लेकिन इन आर्बिट्रेशन वी डिसाइड अवर जज अवर ओन, वी डिसाइड अवर आर्बिट्रेटर ऑन अवर ओन. Second is that procedure we follow our procedure, we mutually decide what procedure to be followed. कोर्ट के अंदर their procedure we have to follow, कोर्ट का procedure we have to follow, right? Arbitral tribunal shall not be bound by the Code of Civil Procedure or Indian Evidence Act 1872. अभी arbitral जो tribunal होता है, जो कि sole arbitrator or maybe the panel of arbitrator, they shall not be bound by the provisions of Code of Civil Procedures or Indian Evidence Act 1872. For example, let us understand. There is a requirement under Indian Evidence Act कि जो evidence आएगा that should be in writing form only. ठीक है. Now, during the arbitration proceedings between A and B, arbitrator wants to take oral statement of A as an evidence. Can oral evidence is allowed under Indian Evidence Act? Oral evidences are not allowed under your Indian Evidence Act. Therefore, can he himself? 1 minute, I think. Okay, so under your Indian Evidence Act के अंदर you cannot take oral evidences, you have to take written evidences only. Can under arbitration the arbitrator या फिर arbitral tribunal take oral evidences? Yes, because arbitration के केस के अंदर your civil procedure के provisions और Indian Evidence Act के provisions are not applicable. Therefore, arbitrator can do so. I hope this is very clear. ठीक है. Now, place of arbitration. अब arbitration का place क्या होगा? Place is to be mutually decided by the parties. If it is not decided by the parties, then it would be decided by the arbitral tribunal. Arbitral tribunal decide करेगा. अगर arbitral tribunal place को decide नहीं कर पाता है, सॉरी, अगर आपको डिसाइड करना पड़ेगा या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को डिसाइड करना पड़ेगा. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉन डिसाइडिंग द प्लेस विल इंटीमेट इट टू द पार्टीज. अगर पार्टीज एग्री करती है देन ओनली दैट प्लेस वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन. लेकिन अगर बोथ द पार्टीज से दैट नो वी डोंट वांट दिस प्लेस, वी वांट एनी अदर प्लेस, देन इन सच अ केस आर्बिट्रेटर हैज टू कंसीडर द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज. ठीक है, बिकॉज इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, राइट. सो डिस्प्यूट अरोज बिटवीन, तो ये वाला एग्जांपल अगर आप पढ़ोगे तो दिस इज द सेम एग्जांपल व्हिच आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन्ड. Now, language to be used in arbitration proceedings. Language क्या use होगी? Language is to be mutually decided by the parties. ठीक है. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा. अगर नहीं डिसाइड कर पाता तो अगर पार्टीज डिसाइड नहीं कर पाती तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करने के बाद पार्टीज को इंटीमेट करेगा. पार्टीज एग्री करती है तो वो डेफिनेटली वही लैंग्वेज को वो लोग आर्बिट्रेशन के टाइम पे यूज में लेंगे. नाउ, सेटलमेंट ऑफ क्लेम एंड एविडेंस सेक्शन 23 SOCE SOS. नाउ, सेटलमेंट ऑफ क्लेम कौन करेगा? क्लेम वुड बी मेड बाय द डिस्प्यूट. अगर मेरे को डिस्प्यूट है, मी एंड राहुल आर द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, मेरे को राहुल के कोई एक्ट से प्रॉब्लम है, so I am the claimant and the person who is going to produce the evidences against me, he is the defendant. ठीक है, तो he will defend the respond जो करने वाला he will defend, and the claimant मतलब the ऋषभ who has a problem with the act, with the contract between both of us, he is the claimant, वो claim करेगा. So he is the claimant, other person is the defendant या फिर respondent. Now, the SOCE shall be complied within a period of 6 months from the date of arbitral received notice of their appointment in writing. मतलब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम या फिर स्टेटमेंट ऑफ एविडेंस, इट नीड्स टू बी फर्निश्ड विद इन व्हाट इज द टाइम लिमिट? इट नीड्स टू बी फर्निश्ड विद इन 6 months. 6 months के अंदर जब से आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है, द आर्बिट्रेटर इज नोटिफाइड दैट ओके दैट यू आर अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर फॉर द
proceedings, तो उसको within 6 months के अंदर you have to submit, both the parties have to submit their statement of claim as well as statement of evidences. Now either party may amend or supplement his or claim defense during the arbitration proceedings unless the arbitral tribunal considers it inappropriate. हमने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, तो क्या हम लोग उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या कोई एडिशनल एविडेंस सबमिट कर सकते हैं? सो डेफिनेटली यू कैन डू सो, लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कंसेंट इज रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. द एसओसी शैल बी फर्निश्ड बिटवीन द टाइम पीरियड अग्रीड बिटवीन द पार्टीज और द अलाउड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. जो भी एडिशनल आप एविडेंस सबमिट करने वाले हो, दैट नीड्स टू बी सबमिट बिटवीन द टाइम लिमिट अग्रीड बाय द पार्टीज या फिर द टाइम लिमिट अलाउड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. ठीक है. नाउ हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स. Unless agreed between the parties, the arbitral tribunal shall decide whether to hold oral hearing या फिर over argument, or whether proceedings shall be conducted on the basis of document or other material. Now, इट इज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हु विल डिसाइड कि कैसा करना है प्रोसीडिंग्स को, कि हम लोग को ओरल करना है कि हम लोग को रिटर्न में करना है. लेकिन अगर पार्टीज ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग ओरल ही करेंगे, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को उसको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, अंडरस्टूड? यस. नाउ ओरल हियरिंग ओनली इफ पार्टीज हैव अग्रीड फॉर ओरल हियरिंग. ध्यान रखिएगा, ओरल हियरिंग्स अगर कंडक्ट करना है तो पार्टीज का अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी होता है उस केस के अंदर. Hold oral hearings on day-to-day basis and not to grant adjournment unless sufficient cause has been made out by the parties. This is dependent upon the arbitral tribunal. Now, default of parties. Parties का default जो है, if the claimant without sufficient cause do not submit his statement of claim, then the arbitral tribunal either अगर जो claimant है, अगर ऋषभ ने has not submitted the statement of claim within the 6 month of time limit, then the arbitral tribunal has a right टू टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स. क्योंकि अगर मेरे को दिक्कत है और मैं ही अपने क्लेम को सबमिट नहीं कर पा रहा हूं, इफ आई ओनली हैव द प्रॉब्लम एंड इवन आई एम नॉट एबल टू सबमिट माय क्लेम्स, देन देयर इज no basis to conduct the arbitration. Therefore, the arbitral tribunal has the right to terminate the proceedings. लेकिन अगर रेस्पोंडेंट सामने वाला राहुल हैज नॉट सबमिटेड हिज डिफेंस का स्टेटमेंट, देन इन सच अ केस इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दैट ही हैज एक्सेप्टेड द क्लेम मेड बाय ऋषभ. Understood? So this point talks about. All right? Yeah. Now let us understand the 15th point, which talks about appointment of experts during the course of arbitral proceedings. If reference made by the parties, or if arbitral tribunal considers, they can appoint an expert who can be one or who can be given their expertise का, उनका जो experience है उसके हिसाब से they will get their expertise के हिसाब से वो अपना response देंगे. So that can be appointed by the आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑन स्पेसिफिक इश्यूज के बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर सकता है. और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में आल्सो डायरेक्ट द पार्टीज टू गिव एक्सपर्ट एनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन, गुड्स, डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन एक्सेट्रा. अगर कुछ भी करना हो तो दैट आल्सो कैन बी डन बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. दैट इट कैन आल्सो बी डायरेक्टेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू द पार्टीज टू द डिस्प्यूट. नाउ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉन oral or written request of any party shall ask the expert to participate in oral proceedings, permit parties to put questions to such expert, or permit parties to present their own expert witness to have viewpoint over the issues. This is very plain English, very plain, nothing to explain in this particular point. ठीक है. कोर्ट असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस. अब क्या होता है ना, कई बार कोई पार्टीज जो होती है, ठीक है, डिस्प्यूट के दौरान, एंड देयर आर लेट्स से कोई एनी द थर्ड पार्टी इज आल्सो देयर हुज एविडेंस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सेटल द डिस्प्यूट, लेकिन दैट थर्ड पार्टी इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ एविडेंसेस. In that particular case, we can make a reference to the court saying that please enforce that person to provide the evidences. So that can also be done. That is also there in your provisions of Arbitration and Conciliation Act. Now, arbitral tribunal has power to apply for court assistance in taking evidence from a person if he or they refuses to give evidence or cooperate in arbitral proceedings. ठीक है? Any party can also apply to court subject to approval from arbitral tribunal. The court shall serve notice to such person. The court है वो उस person को notice serve करेगी to produce the evidence. ठीक है. Now, making of arbitral tribunal and termination of arbitral award and termination of arbitration proceedings. टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स. आर्बिट्रल अवार्ड देने के बाद प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती है, कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसके बाद प्रोसीडिंग्स क्लोज हो जाती है. सेम लाइक आर्बिट्रल अवार्ड आने के बाद में आपका प्रोसीडिंग्स कंप्लीटली क्लोज हो जाता है. It is similar to a judgment given by a court of law. The arbitral tribunal, arbitral award. अच्छा, this EAAW, just add word over W here, ठीक है, बिकॉज नहीं तो आपको क्या कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आर्बिट्रल AA means arbitration agreement also, AAW means arbitral award. Now, it is similar to a judgment given by a court of law. The arbitration award is a remedy to the parties depending upon the issue of the dispute, which includes arbitration agreement. Arbitration award किसने क्या तरीके के हो सकते हैं? It can be an injunction. Injunction बोले तो order of a court directing a party to stop an action. मतलब
एक पार्टी कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, दैट ही इज कंटिन्यूअसली प्रोवाइडिंग बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड है, लेकिन द डिस्प्यूटिंग पार्टी बोल रहा है कि सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट जो गुड्स और सर्विसेज दे रहा है वो बरोबर नहीं है, बट ही इज स्टिल प्रोवाइडिंग इट, क्योंकि उसको तो अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है। तो एज अ इंजंक्शन आर्बिट्रल अवार्ड दे सकता है कि आप स्टॉप करो वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ताकि इट कैन नॉट लीड टू दैट यू कांट से कम लेटर ऑन कि हमने तो बुरा गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया। सो दैट इज बेसिकली इंजंक्शन। मॉनिटरी अवार्ड सबको मालूम है, वन पार्टी पेज टू द अदर पार्टी। इंसेंटिव भी दे सकता है, आर्बिट्रेटर हैज डायरेक्शन टू एड इंसेंटिव फॉर सर्टेन बिहेवियर्स टू एनकरेज द पार्टीज टू द सूट। तो मतलब क्या होता है कि कई बार आर्बिट्रेटर हैज अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आर्बिट्रेटर हैज डिस्क्रिप्शन टू एड इंसेंटिव फॉर सर्टेन बिहेवियर्स टू एनकरेज द पार्टीज टू द सूट। नाउ जनरल प्रिंसिपल्स टू द आर्बिट्रल अवार्ड, who can challenge? Only the parties to the arbitration can challenge the arbitral award को, ठीक है। Authority, award can be challenged before the court. कोर्ट बोले तो arbitration, डोमेस्टिक arbitration है तो हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कमर्शियल arbitration है तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सॉरी, डोमेस्टिक arbitration है तो इट कैन बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, और इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल arbitration इट शुड बी हाई कोर्ट। टाइमलाइंस क्या होती है, अगर arbitration अवार्ड को चैलेंज करना है, इट्स टू बी चैलेंज विद इन 3 months फ्रॉम द डेट व्हेन द अवार्ड इज अवार्डेड टू द पार्टीज, plus extension can be granted by the court that can be maximum of 30 days. All right. Automatic stay, no automatic stay on enforcement. अगर कोई enforce हो गया award तो there is no automatic stay. Parties to request to the court to grant the condition, मतलब parties can request to the court saying that please stop, please make and stay on this particular award. So that can also be done by the parties upon their request the court can also do so, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड क्या क्या तरीके के होते हैं। दिस फाइनल अवार्ड होता है जो कि पूरा प्रोसीडिंग्स होने के बाद में देते हैं। इंटरिम अवार्ड बोले तो जैसे कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स वो लोग कुछ अवार्ड दे देते हैं, दैट इज इंटरिम अवार्ड। सेटलमेंट अवार्ड, अब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान में द पार्टीज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दे कैन अग्री टू सेटल द डिस्प्यूट। तो जो सेटलमेंट, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल ही विल हेल्प देम आउट टू सेटल देयर डिस्प्यूट, ठीक है, ट्रू एंड सेटलमेंट। तो उस सेटलमेंट के दौरान जो अवार्ड दिया जाएगा, द अवार्ड which is granted during that settlement, that is basically the settlement award. Additional award can also be granted. Additional award बोले तो आपने final award दे दिया, उसके बाद में पता चला कि there was one issue which remained unaddressed, ठीक है, कोई वो इशू था वो remain unaddressed था, तो in that situation what will you do? In that particular situation an additional award is to be made by the arbitral or the arbitrator, ठीक है। Now this request can be made within 30 days from the date of receipt of final award by the parties। 30 दिन हो गए फाइनल अवार्ड आने के बाद में, 32nd डे, मतलब 32nd डे यू गॉट टू नो दैट ओके दिस पर्टिकुलर इशू वी डिड नॉट डिस्कस ओनली, so you can't go to court. You can go but you have to make a reference, you have to make उसमें फिर अलग अलग प्रोसीडिंग्स आते हैं, there are अलग अलग फॉर्म्स which needs to be filled by you, by the parties, saying that okay there was sufficient cause, reasonable opportunity आपको दी जाती है कि you have to show cause कि why there was a delay, ठीक है, तो वो सब करने के बाद हो जाता है, but usually the timeline is 30 days. Within 30 days you have to do what, you have to make an application for an additional award, ठीक है। For this you can refer to example on page number 2.36 अगर आपको better understanding लेना हो तो वहां जा सकते हो। Now the arbitral tribunal shall decide the award ex equo et bono or as admissible compositor only if parties have expressly authorized it to do so। मतलब अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से बोथ द पार्टीज को सुन के ही हैज टू गिव अ नेचुरल जस्टिस, यू नो, ही हैज टू गिव अ रीजनेबल जस्टिस टू बोथ द पार्टीज। So that is the meaning of this particular word. Now decision making by panel of arbitrator. Now decision making panel of, अगर sole arbitrator है तो खाली decision will be given by sole arbitrator, अगर panel of arbitrator है the opinion of majority shall prevail. That is why there has to be odd number of arbitrators. I have repeated this many times, also I am repeating now presence of all the arbitrators is not required at the same place. Decision by modern means is also allowed. अभी आपने 3 arbitrator को appoint किया, one is sitting in Bangalore, one is sitting in Mumbai, one is sitting in Rajasthan. Now how is the requirement of all the 3 arbitrators, the presence of all the 3 arbitrators is required at one place? No, they can be sitting at different places, they can hear, they can conduct the proceedings over video conferencing, and they can also do what they can also do is that they can give their judgment, they give their opinion from sitting at their places also. So there is no need to have all the arbitrators at one place, okay? Or modern means is also allowable under the arbitration act.
Now, the decision on question of procedure should be decided by all the members of arbitration. In case of difference of opinion, the arbitral proceedings may be terminated as per section 32. Now, time limit for arbitral award. अब arbitral award कब तक देना होता है? Domestic arbitration है, it needs to be given within 12 months from the date of completion of pleadings under section 23 subsection 4. अभी आप बोलोगे pleadings क्या है? अपन ने वो पढ़ा था सॉस वाला statement of claim and defense, right? Statement of claim and evidences. तो वो आने के 12 months के अंदर अंदर आर्बिट्रल अवार्ड इज टू बी गिवन बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल. मतलब जितना जल्दी हो सके यू हैव टू प्रोवाइड द आर्बिट्रल अवार्ड. हाउएवर द टाइमलाइन गिवन इज 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ SOCE, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड एविडेंसेस. ठीक है. इफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज मेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, अगर आर्बिट्रल अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड ऑल्सो यू राइट डाउन W हियर. ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐड कर लेना W. ठीक है. Arbitration award, if arbitration award is made within 6 months from the date of arbitral tribunal reference, मतलब जिस दिन आपने arbitral tribunal को reference किया, within 6 months if arbitral award is made, then the arbitral tribunal is entitled for an additional fees if both the parties agree. अगर both the parties agree करती है तो additional fees उनको मिल सकता है क्योंकि he has tried to settle the dispute within 6 months only. ठीक है. Now the parties may by consent extend the period specified above by a maximum 6 months का period. तो मतलब ये जो 12 months का टाइमलाइन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो टाइमलाइन दिया हुआ है ये वाला 12 months का टाइमलाइन, so this timeline is to be extended, can be extended if it is agreed between the parties, but for maximum period of 6 months. If arbitration award is not made within extended period, then this is due, and it is due to ignorance of the arbitral tribunal. 6 months के अंदर अगर आप arbitral tribunal ने time limit के अंदर अंदर if he has not given the arbitral award in that situation, and this is due to the ignorance of the arbitral tribunal, then the कोर्ट बोले तो हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑर्डर रिडक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का फीस बाय नॉट एक्सीडिंग 5% फॉर ईच मंथ ऑफ सच डिले आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard. मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तो देगा कोर्ट उनको कि भाई आपने टाइम पे क्यों नहीं सेटल किया इस अवार्ड को, आपने टाइम पे क्यों नहीं दिया अवार्ड, या आपने टाइम पे इस डिस्प्यूट को क्यों सेटल नहीं किया. अगर उनको लगता है कि अगर देयर वाज एन fault, there was an ignorance by the arbitral tribunal, then it shall be reduced by 5%. मतलब मैक्सिमम 5% पर मंथ उनका फीस को रिड्यूस किया जा सकता है जितने भी मंथ का डिले होगा. लेट्स से 4 मंथ का डिले है और 1 लाख रुपीस फीस अग्रीड है, तो 5% into 4 दैट इज 20%. तो मतलब देयर फीस कैन मैक्सिमम बी रिड्यूस बाय 20%. सो मतलब लास्टली अल्टीमेटली उनको फीस कितना मिलेगा, 80,000 रुपीस का फी मिलेगा. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, parties can agree to settle the dispute within 6 months also. This is as simple as that. ठीक है. Now settlement बोलो तो the arbitral tribunal may resolve the issue through settlement if during arbitration proceedings a settlement is reached between the parties. The arbitral tribunal will be arbitrary proceedings. Sorry. If during arbitral proceedings a settlement is reached between the parties, the arbitration proceedings will be terminated. All right. If the arbitral tribunal may reject the settlement request. Arbitral tribunal can also reject the settlement request if terms are against the public policy and unfair and fraudulent etc. अगर ऐसा सब कुछ है तो वो सेटलमेंट को क्या कर सकते हैं, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं. कौन? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या फिर आर्बिट्रेटर. ना फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड. Arbitral award needs to be in writing and signed by the arbitrator. It needs to be in writing and it needs to be signed by the arbitrator. This is the very very fundamental condition for an arbitral award to be enforceable. Now the decision should be backed by a reason unless party agrees. मतलब अगर if one party अगर signed नहीं है, even if it is not signed, then the decision should be backed. अच्छा sorry, this point talks about the decision should be backed by reason. मतलब जो decision दिया है arbitral award arbitrator ने, arbitral tribunal ने, the decision needs to be with proper reasoning that why the decision is in favor of Rishabh or maybe the Rahul. ठीक है. तो it should be given by a proper reasoning unless the parties agrees. Parties agree किया कि नहीं, हमको reason नहीं चाहिए कि आप क्यों दे रहे हो, ये हम लोग ने settle हो गया हमारा, हम लोग को आपने जो award दिया that is agreed to both of us. तो in that case the reasoning is not required. Date and place of arbitral award should also be included in the arbitral award. The signature of majority of arbitrators shall be sufficient as long as the reason for omitting the signature of one arbitrator is given in the arbitral award. मतलब majority of the arbitrator, 3 arbitrator है, दो ने has given their signature onto that particular arbitration agreement, लेकिन one person is not given, तो उसका reason also is to be stated in the arbitral award. That is also fine. ठीक है. मतलब
3 जनों में से 2 जनों ने आर्बिट्रेशन अवार्ड को साइन किया, 1 पर्सन ने साइन नहीं किया। If the reason for his signing is given, not having his sign is also given in the arbitral award, then there is no issue with that. In that particular situation, अगर majority ने अगर signature कर दिया, so that will suffice the condition and arbitration award जो होगा वो enforceable हो जाएगा। Now, as a part of arbitration agreement, the arbitral tribunal cannot award interest if there is specific bar against the payment of interest in the contract unless otherwise agreed by the parties. हमारे agreement के हिसाब से if हमारे जो agreement था, हमारा जो principal contract था between the parties, as per that contract, अगर in the contract it is mentioned that in case of any dispute we will not pay any kind of interest, we will not charge any kind of interest from each of the parties. So arbitral tribunal भी in that particular situation cannot गिव इंटरेस्ट का पेनल्टी एज एन अवार्ड टू द डिस्प्यूटिंग पार्टीज। ठीक है, समझ में आ गया? जिस पर जिसके फेवर में डिसीजन गया है इन उसको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन नॉट गिव व्हाट इंटरेस्ट का अवार्ड कैन नॉट गिव। ठीक है, अंडरस्टैंड? नाउ रिजीम फॉर कॉस्ट, अभी कॉस्ट बोले तो जो भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का जो कॉस्ट होगा वो कैसे क्या होगा, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और द कोर्ट शैल हैव द डिस्क्रिशन टू डिटरमाइन व्हाट whether costs are payable by one party or the another party, the amount of such cost or when such costs are to be paid. So this is the right that arbitral tribunal or the court is having. Now कॉस्ट बोले तो क्या क्या, कॉस्ट इंक्लूड्स लीगल फी, फी फॉर एक्सपेंसेस ऑफ आर्बिट्रेटर, है ना, आर्बिट्रेशन का फीस, एडमिन फीस, अदर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। नाउ जनरली अनसक्सेसफुल पार्टी इज ऑर्डर्ड टू पे द कॉस्ट ऑफ टू द सक्सेसफुल पार्टी। जनरली ऐसा ही होता है, जो अनसक्सेसफुल पार्टी है ही इज ऑर्डर्ड टू गिव द कॉस्ट टू द सक्सेसफुल पार्टी। इफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और द कोर्ट मे गिव डिफरेंट ऑर्डर ऑल्सो बट द रीजन इज टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग। तो मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और अदर ऑर्डर भी दे सकता है कि भाई जो सक्सेसफुल पार्टी है वो ही देगा fees etc. Then in such a case the reason is to be recorded by the court or maybe the arbitral tribunal. Now an agreement which has effect that a party is to pay the whole or part of the cost of the arbitration in an event shall be only valid if such agreement is made after the dispute is in question has arisen. Understand? Now point number 24 talks about termination of proceedings. Proceedings कैसे terminate होगा? If claimant withdraws his claim. मैंने क्लेम किया था कि भाई राहुल ने मेरे साथ चीटिंग की है, अगर मैं विड्रॉ कर लेता हूं अपनी क्लेम को तो प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएगा। द पार्टीज अग्री टू टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स। हम लोग ने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया था, आप बोल रहे कि नहीं छोड़ो यार, ये फालतू के झमेले में नहीं घुसेंगे हम लोग, तो इसको टर्मिनेट करेंगे, तो इट कैन बी टर्मिनेटेड इफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फाइंड्स दैट continuation of proceedings has is unnecessary or it is impossible due to certain reasons. Proceedings को conduct करना भी impossible हो गया, in that particular situation the arbitral proceedings can also be terminated. All right, now once the sole arbitrator terminates the arbitral proceedings, the same cannot be subsequently recalled. सॉल आर्बिट्रेटर ने अगर कोई आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर दिया तो क्या उसको वापस रिकॉल कर सकता है? नो, इट कैन नॉट बी रिकॉल्ड. I hope this is very very clear. Now we are on the verge to complete this particular chapter. Now correction and interpretation of award, additional award. अच्छा, correction वगैरह हो सकता है क्या award का? Arbitral tribunal on request of party may correct the mistake which is given in that particular award or may give interpretation of the award within 30 days from the receipt of the request. आपने अवार्ड दिया, उसमें कोई ऐसा एम्बिग्यूटी था, क्लैरिटी नहीं था, अब पार्टीज ने रिक्वेस्ट किया, तो आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है ही विल गिव व्हाट ही मे करेक्ट द मिस्टेक और गिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द अवार्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट. ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उसको करेक्ट दे सकता है, उसका इंटरप्रिटेशन दे सकता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट. इफ something remained undecided or left out in the arbitral award, an additional award can be requested. This is also we have covered. ठीक है, under extraordinary circumstances, the tribunal is empowered to extend the time limit by another 30 days. मतलब the arbitral tribunal he can extend the time limit by 30 days. जो 30 days का time limit दिया हुआ ऊपर, that can also be extended by maximum of 30 days का time limit. Now recourse against arbitral award. अभी कोई arbitral award हुआ, ठीक है, on certain specific grounds court may set aside an arbitral award if applicant submitted to the court within 3 months of receiving the arbitral award or maybe within the extended time limit as allowed by the court. मतलब arbitral award आपने दिया, ठीक है, parties को लगा कि भाई वो award favorable नहीं है, तो it can be set aside by the court only if on certain specific grounds. Now what are those specific grounds? Grounds on which application from party is required. मतलब specific grounds जिसके ऊपर वो set aside कर सकते हैं arbitral award को. Now in that also there are 2 points. One is that उस ग्राउंड्स के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन चाहिए होगा पार्टी से, और देयर आर ग्राउंड्स ऑन विच देयर इज नो एप्लीकेशन इज नीडेड फ्रॉम द पार्टीज.
the court may suo moto set aside the award. What are those conditions? Condition number one is that it is contrary to the terms of the arbitration agreement. Arbitration agreement के अंदर कोई तो term clause था and the award is contrary, that is contradictory to that particular clause. In that particular situation, the court may suo moto set aside the arbitral award, or if the award granted is against the public policy, in that particular situation also the award may be set aside by the arbitrator. Incapacity, parties under legal incapacity or agreement was अब अच्छा, अब इन किन केसेस के अंदर the application from the parties would be required. First is incapacity. The parties under legal incapacity or agreement was invalid. Later on award होने के बाद पता चलता है कि the agreement was invalid. कुछ तो प्रॉब्लम था, तो पार्टीज को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तभी जाके कोर्ट को पता चलेगा. कोर्ट को नींद थोड़ी आएगी, सपना थोड़ी आएगा कि यार ऐसा ऐसा हुआ है. तो यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, राइट? वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस, आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया. इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अगर लगता है एक पार्टी को कि भाई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दे कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट सेइंग दैट प्लीज set aside this particular arbitral award. Jurisdictional issues, कोई भी jurisdictional issues आ गए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपका प्रोसीडिंग चल रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज था, he doesn't had that a jurisdiction to give that particular award. In that particular situation also the parties can make a request to the court saying that please 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 आप इसको क्या करो, आप इसको set aside करो. एंड किसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा? हाई कोर्ट को देना पड़ेगा, ठीक है. Now, arbitrator decision cannot be set aside by the court only because the court has a different conclusion. अब क्या होता है, आर्बिट्रेशन के अंदर जो आर्बिट्रेटर ने या फिर आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया है, दैट कैन नॉट बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ओनली बिकॉज द कोर्ट हैज अ डिफरेंट कंक्लूजन. अगर खाली कोर्ट बोलता है कि नहीं इसका तो ऐसा आंसर होना चाहिए था, तो कोर्ट कैन नॉट डू दैट. अगर ऐसा होता तो हम लोग कोर्ट में चले जाते ना. अगर आर्बिट्रेटर के पास हम लोग जा रहे हैं तो वट एवर डिसीजन ही हैज गिवन वी हैव टू फॉलो दैट, एंड इवन कोर्ट हैज टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द डिसीजन गिवन बाय द arbitral tribunal or maybe the arbitrators. ठीक है, if arbitral tribunal has proceeded illegally, ठीक है, in that particular situation also the court may set aside the order. Finality and enforcement of arbitral award. The arbitral award is binding upon the parties. We have been discussing this couple of times. Arbitral award cannot be challenged after 3 months or extended period if any allowed by the court. ठीक है, Bombay High Court hold that an award which has become final and binding can be questioned before the court only on the grounds of lack of jurisdiction and not on any other grounds. ठीक है, understand this particular point? This is similar to these points. This हम लोग यहाँ पे पढ़े ना ये वाले points. So this is connected to that particular point. ठीक है. I hope this is done. Now last page of this particular, and we have to do for some points from your page number 1 and 2 as well. 5 minute के अंदर we will be done with this particular chapter. Enforcement. An arbitral award, irrespective of the country in which it was made, is enforceable as a decree of court. An arbitral award, irrespective of the country in which it was made, is enforceable as a decree of court. ठीक है. Once an arbitral award is received, the parties seeking enforcement may file it before the court within the jurisdiction where the subject matter is situated. Now, once an arbitral award is received, the party seeking enforcement may file it before the court within the jurisdiction where the subject matter is situated. Okay? Now, the court may grant a stay on the enforcement of the award. The court may refuse enforcement if the parties against whom the award is involved furnishes proof of condition such as incapacity of the parties. These are the similar points which we have already discussed. यहाँ पे वाली repetition है. Just read through it and you will be done this particular with this particular point number 28 as well. ठीक है. So this was a brief, very brief. I have tried to explain wherever necessary. I know थोड़ा बहुत बीच में speed हो गया था because of the time constraint, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर इसको complete करना पूरा. And yeah, we have tried to cover all the provisions of your ICAI मॉड्यूल, जहां भी रेलेवेंसी थी, एग्जांपल्स भी अपन ने डिस्कस किए हैं. एंड या अब जो पेंडिंग पोर्शन था दैट लेट अस कंप्लीट. ओके, तो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है, ठीक है, विल लर्न इन डिटेल, हमने पढ़ लिया. आर्बिट्रेटर होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सिमिलर टू जज ऑफ कोर्ट. सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन बोलो तो लीगल प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन व्हिच नीड्स टू बी डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज. ऑटोनॉमी होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर. अपन ने पढ़ लिया ये सारे पॉइंट्स. आई नीड नोट टू again explain these points, right? Finality of outcome, usually no appeal against the final outcome. However, there are certain exceptions कि किन केसेस में आप अपील कर सकते हो. Arbitral award will learn in detail. हमने यहाँ पे भी डिटेल में लर्न कर लिया है. So in this particular page we have discussed everything. Here I think this was pending, receipt of written communication. अब जैसे कि अपन ने पढ़ा था प्रोविजंस के अंदर कि एक यहाँ पे I'll just show you 1 minute. I'll show you वो कहाँ पे थे अपन.
हाँ, नोटिस रिक्वायर्ड प्रायर टू रेफरल टू द डिस्प्यूट, ये वाला जो पॉइंट था ना, दिस वाला पॉइंट यू रिमेंबर, ठीक है। नोटिस इज टू बी गिवन बाय द डिस्प्यूटिंग पार्टीज, तो जो पार्टीज है, अगर ऋषभ हैज एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट विद राहुल, देन ऋषभ हैज टू गिव a notice to that particular person. So that is the point which is discussed here. Receipt of written communication, unless otherwise agreed, a written communication is deemed to be received. तो आप written communication दोगे, ठीक है, written communication notice आप issue करोगे, तो वो notice कहाँ पे issue करोगे? तो that needs to be issued delivered to the address personally. आप या तो उसके एड्रेस पे एड्रेस उसको आप दे दो, या फिर एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, उनके बिजनेस प्लेस पे आप उस नोटिस को दोगे, या फिर हैबिचुअल रेजिडेंस ऑफ और द मेलिंग एड्रेस। तो इन 4 प्लेसेस पे, या फिर या तो आप उसके एड्रेस पे जाके दोगे, या फिर आप उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे दोगे, या फिर उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे दोगे, और या फिर आप उसके मेल एड्रेस पे, मेलिंग एड्रेस बोले तो ईमेल आईडी पे भी आप उसको क्या कर सकते हो, नोटिस को भेज सकते हो। अगर प्लेस नहीं मिला, आप उसके घर पे गए पर्सनली देने के लिए, बट ही वाज नॉट फाउंड देयर, बिजनेस प्लेस वाज शट, ठीक है, यू कुडंट फाइंड हिज रेजिडेंस आल्सो यू कुडंट फाइंड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। If above places are not found and record of attempt to deliver is available, record is available, record बोले तो अगर आपने courier से किया है तो courier का receipt रहेगा, tracking ID रहेगा, so that is the record that you have, then it would be deemed that that person has received the notice, even though it has not been received by that person, it would be deemed that the notice has been received by the person, ठीक है। This section is not applicable for written communication in case of judicial authority. Point number 4 talks about waiver of right to object. अब क्या होता है ना, इफ पार्टीज डेरोगेट्स फ्रॉम एनी प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, अब क्या होता है ना कि हमने एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया था, ठीक है, और पार्टीज उसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, और मैं ऋषभ, मैंने क्लेम किया था अगेंस्ट राहुल, मैं कोई प्रोविजंस को आई एम नॉट फॉलोइंग अप, ठीक है, ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, एंड knowing that person, वो person जानता है, राहुल knows that I am not following certain provisions, still he doesn't make any kind of objection and he continues with the proceedings, ठीक है, then in such a case it would be assumed that that person has waived off his right to object. You understand this point? Now if parties derogates from any provisions of this part, ठीक है, or any requirement under the arbitration agreement has not been complied with, yet the parties proceeded with the arbitration without stating that the objection of such non-compliance within the time limit or the period allowed, मतलब राहुल ने कोई objection नहीं किया against the जो भी प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, अगेंस्ट द जो भी मैंने नॉन कंप्लायंस किया है, देन इट वुड बी डीम्ड दैट ही हैज वेव्ड हिज राइट टू ऑब्जेक्ट एंड देयरफॉर द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी अबैंडन्ड, कैन नॉट बी व्हाट यू से, कैन नॉट बी what word I can use here, the arbitral proceedings cannot be objected by Rahul in the later stage of the proceedings. You understand this point? This is the example which is given, which we have already discussed. Here it is deemed that the party B has waived his right to object. यहाँ पे क्या हुआ, party has initiated arbitral proceedings for a contract dispute, ठीक है. Now the party A is non-compliant for certain provisions of the principal contract or maybe the arbitration agreement. However, party B knowing that he continues with the arbitration proceedings in this particular situation, he actively participated and in the later stage of arbitration proceedings he cannot object to the proceedings. The proceedings will continue and it would be assumed that he has waived his right to object. Extent of jurisdictional intervention. If arbitration proceedings, no judicial authority shall intervene in the arbitral proceedings. This is to be upheld the autonomy of the parties and the arbitral proceedings. मतलब जुडिशियल इंटरवेंशन कोई भी पार्टी नहीं करेगा, जैसे कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज देयर तो कोर्ट आके कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगा अनलेस उसको आप कोई अनलेस द पार्टीज हैव मेड एनी एप्लीकेशन या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज मेड एनी एप्लीकेशन टू दैट पर्टिकुलर पार्टी. This was all about your chapter number 2, which talks about what about the arbitration के provisions, which talks about the all the provisions of your arbitration. I hope you like this video. If you like this video, please share it with all of your friends ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है. Please share it with all of your friends and thank you so much for watching. Thanks a lot. Thank you.